इजराइल में मैं जहां हूं वो है नागेव डेजर्ट। यहाँ पर हम एक लोकल इजरायली के घर में हैं और उन्होंने किस तरह से अपने यहाँ पर फार्म बनाया हुआ है और वो फार्म 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। समुंदर के किनारे डेजर्ट की अनुभूति बहुत अटपटी होती है, पानी की बहुत कमी है और किस तरह से बढ़िया बढ़िया फसल इन्होंने यहाँ उगाई हुई है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब की जड़ों में आप विदाउट वाटर, बिकॉज वाटर स्कार्सिटी इज द मेजर प्रॉब्लम हियर। So these this is the guy from Gaza called to my husband, you are like my brother. We're like, you know what is the holiday Pesach? No. Passover. To kill, destroy, it's different. Kill, it's very easy. साथियों, फिलहाल जो मैं जहां मैं हूं वो है इजराइल, और इजराइल में मैं जहां हूं वो है नागेव डेजर्ट। और नागेव डेजर्ट इजराइल के अंदर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डेजर्ट माना जाता है। इस समय 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। समुंदर के किनारे डेजर्ट की अनुभूति बहुत अटपटी होती है, पानी की बहुत कमी है। और ऐसे में ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं, मैं विशेष रूप से राजस्थान में रहने वाले जो हमारे भाई हैं उनके लिए ये सेशन करने जा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर खेती में आप देखिए कितने बढ़िया से इन लोगों ने ये नींबू उगा रखे हैं। एक संतरा यहाँ पर गिरा हुआ है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनकी खेती होते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़िया बढ़िया फसल इन्होंने यहाँ उगाई हुई है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब की जड़ों में आपको दिखाई देगा इस पानी का सिस्टम। क्योंकि असल मायने में हम राजस्थानियों को ना बस यही समझना होता है कि रूट तक पानी कैसे पहुंचता है। आप इस पानी के सिस्टम को अगर आप देखें तो ये ड्रिप इरिगेशन है। बड़े बड़े पेड़ पौधों के बीच में इन्होंने पानी कैसे पहुंचाया हुआ है। सब तरफ डेजर्ट और उसके बीच में यहाँ पर आप ये नींबू संतरे की खेती होते देख रहे हैं, माल्टों की खेती होते देख रहे हैं। अब हम आगे चल के आपको बताते हैं, क्योंकि हम किसी ऐसे घर में हैं जो खुद से इसे उगा रहे हैं, वाइन की खेती कर रहे हैं, वाइन पैदा कर रहे हैं, ग्रेप्स की खेती कर रहे हैं। आइए हम उसको देखते हैं। मैम, it is a grapes farm or it's a citrus fruit farm? Which fruit is there? This is the lemon tree. Lemon tree, okay. This is the appelsino. It's like a lemon, but it's Okay, citrus food. Orange. Orange, okay. And we have also olives. Okay, come. I will show you. Yeah, please. So दोस्तों, हम जहाँ पर अभी फ़िलहाल हैं ये एक डेजर्ट का एरिया है और मैं यहाँ पर फार्म देख करके बड़ा खुश हूँ। यहाँ पर हम एक लोकल इजरायली के घर में हैं और उन्होंने किस तरह से अपने यहाँ पर फार्म बनाया हुआ है और वो फार्म प्रॉपर फार्म हाउस की तरह से बना हुआ है। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि इनका फार्म कितना बड़ा है। आप देखेंगे तो वहाँ तक दूर तलक आप इसको ऊपर करके दिखा सकते हैं। इसमें स्टैंड ऊंचा हो सकता है। अगर हम करें तो इस स्टैंड को पिक करके यदि आप देखें तो ये दूर तलक अगर आप देखें तो इनके फार्म आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये जो फार्म है ये सिट्रस फ्रूट के फार्म है, मतलब नींबू की खेती हो रही है, संतरे की खेती हो रही है और यहाँ पर वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है। ये लोग जिस तरह से इस काम को कर रहे हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर विजिबल है। And I think if I give them, it will be peace and quiet. But in 7 October, they came back from Gaza with a map. They know where I live. Oh. They know that I have a son with weapons because the army. They know that I have a dog. They came with a map and they know everything. And I think this is the guy from Gaza called to my husband, you are like my brother. We're like, brother doesn't come to kill you. In 7th October, after he worked with you 25 years together, you know, in Pesach, you know what is the holiday Pesach? No. Passover. Passover? It's one of We the doesn't main eat holidays meat. in the Okay, spring. okay. We doesn't eat bread, okay? Okay. And not only bread. So what we do, we take a lot of food that we cannot eat in this holiday Okay. and give them Amash, a big truck, go to Gaza and bring them all the food, free. All the clothes, free. The work, kilo, 25 years, you think, you know, it's a lot of time. And after this, they came to my house. They want to destroy, not to kill, to destroy. It's different. Kill, it's very easy. So how did you Because we have survive? body. But to burn the body, this is the difficult. We cannot recognize our friend. And we work together.
And before Shabbat, he came to me and asked me, "You can pay me before I work? Only now, because maybe I cannot come in Sunday." "Why you cannot come?" "Because I have a holiday." "No, holiday. We have a holiday. What you have? I know the Islam. It's not a holiday of them." "No, I cannot, but you know, my grandmother is killed in 1929. 1929. מאורעות תרפ"ט, and she all the time told me, "Don't believe them, don't believe them," but she died, and I forget what she told me, what she teach me, because we're naive. We think, okay, it was before a lot of years. Why, if they come, there is I'm a teacher of a Bible, okay? Okay. And in the Bible, there is a pasuk, A chapter. והפסוק כותב, "אם רעב שונאך האכילהו לחם." אם מישהו שונא אותך, תאכיל אותו, הוא בטח לא יבוא לטרוף אותך. So טעות in חמורה. the Bible, it says if someone hates you, feed him with bread. Because if you feed him with bread, he won't come to attack you. A lot of They them, came. they come. So it's a very, to say disappointed, it's a little word. It doesn't have a word to And how many workers were there in your farm? now. Now, at that time, Now, in that time, I have 12 12 workers. They were from Gaza. from Gaza. Okay. And now onwards, Now I have teenager, it's my student. okay. They come to work. Okay. They have a job, and they learn a lot from the work with the ground. ओके साथियों, जिस जगह मैं हूं, मैम ने जो बातें बताई बस उसको मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। और बात इतनी है कि इस खेत को जो आपने अभी दूर से देखा, बहुत बड़ा सा जो फार्म था, इसको मैनेज करने के लिए गाजा से लोग आया करते थे और यहाँ पर आकर के वो सर्वेंट का काम किया करते थे। मैंने पहले भी बताया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम हेयर एंड वर्क। लेकिन 7 अक्टूबर से पहले जो घटना घटी, उससे मैम को ये डाउट हो गया था कि ये लोग कुछ तो कुछ करने जा रहे हैं। यहाँ से खूब सारा उनको पैसा वगैरह सब दिया जाता था, मदद दी जाती थी। मैम के घर में 12 लोग गाजा से आके काम करने आते थे। और मैम बता रही हैं कि जिस दिन ये घटना होने वाली थी, उससे पहले ही यहाँ के वर्कर्स छुट्टी पर चले गए और जो अटैकर्स थे वो बाकायदा मैप बना करके आए थे और मैम के घर का मैप था। मैम, डिड दे अराइव एट योर प्लेस? They doesn't arrive because we have a very good manager of Kibbutz Kemenot, the commander of. So there's every village and kibbutz here Yeah. has like an emergency unit, which their job is to protect the village. Okay. They're not the army. They're not the police. They just have a licensed weapon with them. Okay. They are in contact with other people within the community. And Okay. if something happens, they are in contact with one another to protect the community just for incidents like this. And we are six kilometers from the border. Yes. So we have Faraza. We have So how long they came inside? They want to come inside in 7:30 in Okay. the morning, but Yeah. we doesn't have weapon. So what we do, we take the car. So how did you came to know that they have your map? Because after Mhm. we succeed to kill them, Mhm. we ממש אספנו, we pick after all the map, because we want to know, כאילו, what is it, and after this they have a map of our school, okay? Of our children's school, okay? And ממש, איך הם תכננו לכבוש, לרצוח, ממש היה כתוב שם כמה ילדים. They have detailed Okay. Okay. how many kids, how do they יש לי את המפה של הבית ספר. how do they intend to actually murder the kids within the school? So they were planning from since very long actually. Yeah. Yeah. By it might possible by your workers itself they came to know. ברור. Yeah, more היה להם possible. מפות. They have דרך notebooks, אגב, they have היה להם מפות, אבל לא של המסיבה. ככה ידענו שהם לא ידעו על המסיבה. כל המפות שמצאנו יש בידיי, כי אני עובדת עם משרד הביטחון. she says that all the maps they found, found a lot of maps of villages and schools or whatever. No map of the actual Nova festival. The music. לא מפ. So she says by that we know that was a mistake or that's a surprise. They didn't. They didn't even Because actually. this Yes. mistake, Yes. the party people
save us. Because They engaged in that way. They just yes, and, yes, it yes, yes, doesn't go to the yes, 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 no, yes. no to Netivot, not to Be'er Sheva, Yeah. not to us, not because the festival. Ma'am, please, may I know how do you farm these trees actually? I am from Rajasthan, which is a desert. Actually, there is a Thar desert. Here it is Nagev desert. We are in Thar desert. So, without water, because water scarcity is the major problem here. How do you people grow such a green trees here? מהמם מה שהוא שואל, בגלל המים. So she says it's an excellent question. Yeah. The answer, because of the water. לא, עכשיו אני אספר לך Now על she's תהליך telling me. הלמון, מה ספיישל with the lemon. Lemon, it's the only tree, פירות הדר, לא יודעת The איך קוראים את זה. citrus, the only Yeah, citrus fruit, tree, yeah, yeah. הפרי היחיד שאנחנו זיהינו שיכול לצמוח 3 פעמים בשנה ולא רק פעם אחת. איך? לצמוח 3 פעמים או פירות 3 פעמים? פירות 3 פעמים בשנה. Okay, so we discovered here in Israel that from all the citrus trees, the lemon is the only tree that can give fruit 3 times a year. איך עושים את זה? 2 months, we doesn't give water to the tree. And he think maybe I will be dead, נכון? Because we doesn't give him 2 months water. And after we start again to give him water, the tree said, okay, now I have food, now I give a lot of prey, maybe I will die. Okay, it's like a psychological trick on the It's a tree. manipulation they do to the lemon tree to get him to think maybe there's no more water. He Okay. thinks there's no more water, semi-stressed, is reacting to it. Okay. Then a lot of water and But it's only, דרך אגב, it's only lemon. only lemons react Oh, like that. okay. Yes, I understand. जैसे ही पानी की कमी होती है, लेमन में एक्चुअली ये फल है और फल की नेचर होती है कि वो पानी को स्टोर करने लगता है. पानी स्टोर करने लगता है तो यहाँ ट्रिक ये अपनाई जाती है कि इसको कम पानी दिया जाए ताकि ये पौधा ज़्यादा पानी स्टोर करे. और उस तरीके से यहाँ का लेमन जो है वो 3 बार साल में फसल दे रहा है, जैसा मैम ने बताया. एंड हाउ डिड दिस ड्रिप इरिगेशन वर्क्स मैम? איך תפתחות עובד? טפטפות, you can see? Yeah. Very good. So these drip irrigation pipes are rooted into the plant root. זה בתוך השורשים או שזה ככה? לא, מונח זה מעל? ככה, זה ככה So מונח she מעל. says it's not rooted into the roots. Okay. זה טיפה מעל. It's just above, Okay. and שליטה על זה. there's like full control over it. So they have like computers Yeah, you can and see like a very exact amount of water. Oh. She knows how much water, what time of the day. So this is totally technically managed, ma'am. What? Technically managed through על ידי computer? מחשב ומערכות השקיה. לא, ידני. ידני? אנחנו רק ידני. In our end. למה ידני ולא מחשב? בגלל שיש לנו, בהתחלה היה לנו כמה סוגים של עצים, אוקיי. ורצינו להפריד ביניהם, ולא עשינו את המערכת הזאת כי היו גונבים לנו מלא ראשי מערכת בהתחלה, אז כבר ויתרנו על זה ועשינו את זה ידני. אוקיי. כי את הידני לא גונבים. So she says today Mhm. they do it manually. Okay. It used to be like a computer doing the things, but the head of the computer Okay. is very expensive. Oh. And every time they bought a new head of a computer, Okay. someone took it, stole Okay. it from the field. Okay. Okay. So they said we don't want to deal with it, to protect it, to guard it. We'll do it manually. And how do you fertilize them? Organically or inorganically? דישון אורגני או לא אורגני? הדישון לא אורגני, בפרדס הזה לא אורגני, This אבל יש orchard, לנו- it's not organic. אבל יש לנו Okay. את הפרדסים מחוץ למושב שדווקא הם אורגניים. And they have Okay. different fields that over there it is organic. Because they near, בגלל שהם ליד עצים אחרים, Okay. אז החלטנו יש גם שם גם ענבים, גם זיתים, והחלטנו שכל החלקה הזאת, אם אני אורגנית, אני צריכה my neighbor will be also organic. Okay. If not, it's not... The rules in Israel that if you want a stamp of organic product, organic fruits, Okay. it's not that only your farm needs to be organic, also your Then neighbor. has to be. Oh. This is somebody Okay. else, this And is you can't somebody control else. someone else to make him Okay. 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 organic. Okay. So what Okay. it is that this plant not organic, but over there there's a bigger Okay. field. Okay. That's what Okay. will be organic. Okay. Nice meeting you, ma'am. Thank you so much.